they found that I had higher levels of aluminum in the blood, in the urine, and my father died of Alzheimer's. Alzheimer's is a disease affecting about 1% of the population, whose minds become foggy and later they don't remember. Now, plugged up arteries and capillaries in the brain, called atherosclerosis, behave somewhat in a similar manner. That is called senile dementia. But Alzheimer's is slightly different. It is over a period of 4 or 5 years, and it can start as early as age 60. People don't remember, and their memory becomes very bad very quickly. It doesn't happen very often in older people, but 1 out of every 100 it does happen. So EDTA also is good if you have high copper levels in your urine or in your blood, and also higher levels of aluminum. It will help those. And other illnesses. The other benefit of EDTA chelation, I know in the doctor's office that were doing chelation in Canada and United States, that about half the people had plugged arteries and poor circulation around the heart and in the brain, but the other half of people had diabetes. And in diabetes, this chelation helps many people with diabetes, because in diabetes, the circulation in the arteries and capillaries in the brain and the rest of the body deteriorates very quickly, and life is shortened. People with diabetes, severe diabetes, later on have toes amputated, can have a leg amputated, and EDTA chelation will stop that and will give you a good quality of life for a long, long time. So I highly recommend this. It is recommended for people with diabetes also. Not only poor circulation, but diabetes also. Right. You told us that the iron is causing, it aggravates diabetes. It aggravates diabetes and also for those who have it. Hypertension too. That's correct. So इन्होंने बताया कि अगर आयरन ज़्यादा हो जाए खून में तो उससे डायबिटीज़ भी बढ़ जाती है और हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है. तो इन्होंने बताया कि मेरे में कॉपर भी ज़्यादा था, मेरे ब्लड में भी और यूरिन में भी, और कॉपर के ज़्यादती की वजह से इंसान में एक डिप्रेशन होती है और आदमी हर वक्त परेशान रहता है और डिप्रेस रहता है, और ये डिप्रेशन इस इंतहा की हो जाती है कि इंसान ख़ुदकशी करने के लिए भी तैयार होता है. इन्होंने फर्दर बताया कि एल्युमिनियम भी इनके यूरिन में ज़्यादा था और ब्लड में भी ज़्यादा था, और एल्युमिनियम, ये रिसर्च के साथ देखा गया कि एल्युमिनियम जो जब ज़्यादा हो तो इंसान को अल्जाइमर्स डिज़ीज़ भी हो जाती है. अल्जाइमर्स डिज़ीज़ में 60 साल की उम्र में शुरू होती है और इंसान भूलना शुरू हो जाता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता इतना भूलता है कि वो याददाश्त बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. बेसिकली एल्युमिनियम जो होता है ये इंसान के दिमाग के खून की नालियों में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता क्लॉग होना शुरू हो जाता है. अब अल्जाइमर्स डिज़ीज़ और एथेरोस्क्लेरोसिस में भी डिपॉजिट होता है, लेकिन अल्जाइमर्स डिज़ीज़ में एल्युमिनियम ज़्यादा होता है. इंसान का, इन्होंने बताया कि इंसान का अल्जाइमर्स डिज़ीज़ में दिमाग फॉगी सा हो जाता है कि बिल्कुल जैसे धुंधला जाती है याददाश्त, बिल्कुल उस तरह हो जाती है और कोई चीज़ आहिस्ता आहिस्ता याद नहीं आती, और यही इंसान में आखिर में इंसान की डेथ, इंसान की मौत का ज़िम्मेदार हो जाता है.
अभी इन्होंने देखा कि जब यूएसए में और कनाडा में थे, जब किलेशन करवाने के लिए जाया करते थे, तो उन मरीज़ों में 50% वो मरीज़ होते थे जो हार्ट पेशेंट्स होते थे, और 50% वो होते थे जिनको डायबिटीज़ होती थी। अब जब ये किलेशन करवाते हैं तो उनकी हार्ट डिजीज़ भी बेहतर हो जाती थी और उनकी डायबिटीज़ भी बेहतर होना शुरू हो जाती थी। बेसिकली डायबिटीज़ के साथ क्या होता है कि डायबिटीज़ के साथ इंसान के खून की नालियाँ बंद हो जाती हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस में भी बंद होती हैं, और जब बंद होनी शुरू हो जाती हैं तो खून का बहाव कम हो जाता है। जब खून का बहाव कम होता था तो उसकी वजह से इंसान की हाथ, उंगलियां या पाँव भी एम्पुटेट या काटने पड़ते थे कनाडा में। तो जब इसका इलाज किलेशन थेरेपी से किया गया तो उनकी हार्ट कंडीशन भी बेहतर होनी शुरू हो गई और उनकी डायबिटीज़ भी बेहतर होनी शुरू हो गई। यस, I'd like to talk about high blood pressure. राइट। There are some family groups that have high blood pressure. In high blood pressure, which can be a killer and shorten your age and the quality of life. There are high blood pressure is caused by two different things. 80% of the time, high blood pressure is referred to as normal hypertension that seems to be hereditary in some families. 20% of the time is not a very common type of high blood pressure. It is because of abnormal activities by the adrenal glands. And that type of high blood pressure you can tell because the person has normal blood pressure most of the time, but a day here and a day there, all of a sudden their pressure goes way high, maybe under stress or worried about something, goes very high, sometimes dangerously high. I'm not referring to that kind of adrenal gland type high blood pressure, but the other high blood pressure that is very common in a lot of people and often in old age. Chelation therapy removed high blood pressure from my mother in 85 years of age and myself. It took about a year to year and a half. After about 10 or 15 treatments, 20 treatments, it apparently cleans up the kidneys that regulate pressure in the body. And now at age 76, my pressure is quite normal. It's 130/80. When I was 35 to 40 years of age, before chelation, my pressure was very high. It was 160/100, and I was 20 kilos lower in weight than I am now. Normally, lower weight causes lower blood pressure. If I did not have chelation, with my gain in weight of about 15-20 kilos since that time, I'd probably be dead by now. But chelation is very important. For 80%, it will reduce, and you will not even have to take blood pressure pills anymore, or if you do, it'll be a very, very low, small amount dosage. And as you know, as the men know, taking high amounts of blood pressure pills often will affect sexual performance and other problems. It deteriorates the arteries because they get thicker, and it's just a poor quality of life later, and you probably die, as my grandmother did, of high blood pressure and a ruptured aorta. So bringing blood pressure down, not just by medication, but by chelation, which is more permanent, is very necessary for anyone with high blood pressure. And it is not normal. Some doctors will tell you, well, your pressure is higher because you're older, and we'll have to give you drugs to bring it down. It is not a good solution.
the best is chelation to clean up the arteries and to clean up the kidneys which cause the high blood pressure. So, about hypertension, your mother also had hypertension? My mother and my grandmother. And my grandmother died of hypertension from a ruptured aorta in 1955 when they didn't know much about blood pressure pills and we didn't know about chelation at that time. And your mother? My mother lived another 7 or 8 years till in the 90s. It brought her pressure down quite substantially. With the chelation therapy? With chelation therapy, and she was almost totally off high blood pressure pills. And she died a natural death. हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के मतलब विलियम ने बताया है कि 2 किस्म की हाई ब्लड प्रेशर होता है। 80% में तो ये हेरिडिटरी है जो इंसान अपने माँ बाप से इनहेरिट करते हैं, और 20% एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, और वो किडनी में प्रॉब्लम की वजह से होता है। वो एबनॉर्मल ऐसे होता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मली इंसान का ठीक होता है, लेकिन जब कोई टेंशन हो, कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो सडनली बहुत हाई हो जाता है। अब ये 80% में जो होता है प्रॉब्लम, उसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी को ख़तरा होता है, जल्दी मौत हो जाती है, और ये इंसान के लिए एक किलर कहा जाता है। बेसिकली चेलेशन थेरेपी की वजह से इंसान की किडनीज़ या गुर्दे साफ़ होते हैं। बेसिकली गुर्दों की वजह से और एड्रिनल्स की वजह से इंसान का ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, और जब ये क्लॉग हो जाएं या बंद हो जाएं इसकी नालियाँ तो सडनली ब्लड प्रेशर राइज होना शुरू हो जाता है। विलियम ने बताया कि जब चेलेशन थेरेपी की जाती है तो किडनीज़ क्लीन हो जाती हैं और इंसान का ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ खून की नालियाँ ही बंद नहीं कर देती, ये इंसान के जिस्म के हर हिस्से में इसके बुरे असरात होने शुरू हो जाते हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ हो गए, ब्रेन हेमरेज हो गया, ऑर्टा या खून की नाली फट जाती है इसी डिज़ीज़ की वजह से, हाइपरटेंशन और एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। तो ये बता रहे थे कि 40 साल की उम्र में इनका ब्लड प्रेशर था 160/100, जो कि 40 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा था। अब और वज़न उस वक़्त 20 किलो कम था। जब इन्होंने कोई इलाज और नहीं किया, सिर्फ चेलेशन थेरेपी की है। अब 40 साल की उम्र में इनकी ब्लड प्रेशर था 160/100, और अब 76 साल की उम्र में इनका ब्लड प्रेशर, व्हाट्स योर ब्लड प्रेशर नाउ? 130/80। इनका आप 76 साल की उम्र में 130/80 है, और ये मेंटेन है, और इन्होंने इसके लिए ये कोई इलाज नहीं करते। तो ये बता रहे थे कि अगर चेलेशन थेरेपी ली जाए तो इंसान को हाई ब्लड प्रेशर के लिए कोई इलाज नहीं करना पड़ता, कोई और मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती। बेसिकली डॉक्टर यही कहेंगे कि आपकी उम्र अब ज़्यादा हो गई है तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए गोलियां खाएं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि ये गोलियां खाने से ब्लड प्रेशर वक्ती तो बेहतर होता है, लेकिन बेसिकली उसका इलाज नहीं होता, और इंसान हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जल्दी फौत हो जाता है, और डेथ होना जल्दी हो जाती है या पैरालाइज हो जाते हैं। तो ये बता रहे थे कि इनकी दादी 1950s में इनकी दादी की डेथ हुई हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। उस वक़्त इस इलाज का हमें पता नहीं था। बाद में इनकी वालदा को हाई ब्लड प्रेशर था, और 80s जब उनकी तकरीबन 80 साल उम्र हुई तो उनको हमें चेलेशन थेरेपी का पता चला, तो उस वक़्त हमने चेलेशन थेरेपी की। चेलेशन थेरेपी के से पहले ब्लड प्रेशर का इलाज करवाती थी, लेकिन चेलेशन थेरेपी के बाद उन्हें कोई दवाई लेनी नहीं पड़ी, और वो तकरीबन 95 इयर्स की एज में उनकी डेथ हुई।